अच्छा, देखें एक्सरसाइज नंबर 65 कहता है दिस न्यूज़पेपर। तो देखें किस तरह लिखेंगे। ये न्यूज़पेपर देखें, ये है न्यूज़ और ये पेपर, न्यूज़ पेपर, न्यूज़ और ये पेपर, इस तरह लिखेंगे पी और ये आर होगा न्यूज़पेपर। अच्छा, एड्रेस to bring to its readers the truth and nothing but the truth. Full stop. We are sorry to have to trouble you, but we notice that you have charged 22 pounds 10 shilling and 6 pence for your catalog item number 463, which you supplied to us on 16th October. Full stop. In your price list, the item is listed at 21 pound 10 shilling and 6 pence. ये क्या है? ये करेंसी है। क्या है ये? यानी बरतानिया, यानी ये की करेंसी है। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि ये रुपी है, फिर ये पैसा है, और इसके बाद फिर क्या है? ये आना है या टाका है। तो इस तरह ये भी यूनिट ऑफ अकाउंट है। 20 यानी पाउंड है, फिर शेलिंग है, फिर पेंस है। 21 पाउंड 10 शेलिंग एंड 6 पेंस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ a credit of 1 pound is thus due to us. This is evidently an error in billing. Full stop. Thank you for bringing to our notice the error in bill of 16th October for 4 oak chairs. We are enclosing our credit note for 1 pound, and we apologize for the trouble to each we have put you. Full stop. अच्छा, फिर कहता है देखें डियर सर, तो ये किस तरह लिखेंगे? ये आसान है। देखें डियर सर, इस तरह लिखेंगे। डियर सर, we are glad to know that you wish to be a member of our club. As as a manager of the club, I wish you to feel at liberty to use our facilities. फैसिलिटी तो किस तरह लिखेंगे? देखें फैसिलिटीज। अच्छा, इस तरह लिखेंगे फैसिलिटीज until you are elected a member. Your name is to be proposed next week. अच्छा, फर्स्ट ऑफ फिर कहता है एक्सरसाइज नंबर 66 कहता है डियर सर, during the month of April we propose। क्या है ये? we propose इस तरह लिखेंगे। अच्छा, we propose to increase the prices of a number of the item at present। तो किस तरह लिखेंगे? एट प्रेजेंट। देखे एट प्रेजेंट इस तरह लिखेंगे। अच्छा, एट प्रेजेंट इन द कैटलॉग increases are necessary because of the higher cost we now have observed. Full stop. If your branch is going to issue a new catalog, you should not proceed with it until you have the new prices. Please remember that you must not issue your list until we post you a new prices. Yours truly। ये क्या है? Yours truly।
तो ये yours truly किस तरह लिखेंगे देखें, ये है yours और ये है ट्रोली, yours और ये ट्रोली। अच्छा, फिर है एक्सरसाइज नंबर 67, कहता है डियर मिस ब्लैक, डियर मिस Black, in April, we brought out a new series of history books. The series is for use in forms 2 to 6. These books solve many problems for the teacher. First up, they treat the subject in a bright, practical way, and we think you will agree that the किस तरह लिखेंगे देखें, आसान है, मुश्किल नहीं है। and we think you will agree that the इस तरह लिखेंगे। series gives a new and better approach to the subject। अच्छा, फिर कहता है देखें, with your present heavy program, the books should enable you to make the greatest progress with your classes. If you would care to inspect the books, we should be glad to dispatch copies to you. If you would give the books a trial, we know you would be delighted with the results. Delighted with the results। तो किस तरह लिखेंगे, with the results। देखें, with the results, with the results इस तरह लिखेंगे। अच्छा, फिर है एक्सरसाइज नंबर 68। तो आते हैं यहां से हम पढ़ते हैं, यानी लास्ट में हम आ रहे हैं, देखें। अच्छा, ये है एक्सरसाइज नंबर, क्या है ये 68 है। देखें, डियर डॉक्टर वाटर, वी आर taking the liberty of asking to address our graduates on Monday 29th January. Our principal and teachers as well as the graduates would be proud to have you deliver an address. We know that what would you देखें, ये किस तरह है, What would you, आसान है, किस तरह लिखेंगे देखें, ये लाइन है, लाइन से ऊपर है, What would you इस तरह लिखेंगे। अच्छा, tell us as the principal speaker on our program would be remembered by all our graduates for many years। तो किस तरह लिखेंगे ये, for many years इस तरह लिखेंगे, for many years। अच्छा, to come, we know that you have many class to speak, and that your time is exceedingly valuable, but we feel that you will be glad to talk to us if you possibly can. We trust that you will be accept first up yours truly।